Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name, I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear guys, now I am going to live. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Yes, dear guys, now I'm going to tell you about Module 11, and this is about cultural awareness and context in IELTS speaking. Yes. So now, mm, please tell me in the chat box, is my voice clear? And the people on YouTube can tell me, is my voice clear? And then you can tell me if you're facing any problem. Yes. I'll share the link now. Wait a second. Yes, this is the link. And you can join right now. Wait a second, I'll check that. Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name, I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yes. Now we have to understand the cultural awareness and context in IELTS speaking. You know, understanding cultural references in English. So these are very important. These are very important. सर मालूम नहीं यार से काम इधर नहीं था सुबह ना 6:30 क्लास के टाइम पे आ जाएंगे सर मैं क्लास में ले लूंगा और ये वगैरह जो काम करके सबमिट करो In IELTS speaking, cultural references often appear in questions or in the way English is naturally spoken. Right? So, understanding these references is necessary for the students of IELTS.
In IELTS speaking, cultural references often appear in questions or in the way English is naturally spoken. Understanding these references help you respond correctly and appropriately. Example. For example, if someone asks you a question, describe a festival in your country. Describe a festival in your country. And now I'll tell you, I'll give you the good response here. And it's a good response. And what's that? One of the most popular festivals in Pakistan is Eid al-Fitr. A direct answer. It marks the end of Ramadan, a month of fasting. People wear new clothes, visit relatives, and enjoy traditional dishes like sheer kurma and biryani. So, what you have done over here, one of the most popular festivals in Pakistan is Eid al-Fitr. This is your direct answer. This is direct answer. Okay. This is direct answer. And after that, you can add more what Eid al-Fitr is. Okay. You can add detail. It marks the end of Ramadan, a month of fasting. And what is Ramadan? A month of fasting. And now you can tell more about the what the people wear over there. The people wear new clothes and visit relatives and enjoy traditional dishes like sheer kurma. You can describe the people where on Eid al-Fitr and what the people eat on these occasions, right? So this is one of the example. Okay, now I will yes. Learn about common British and global cultural elements such as holidays. You must know about Christmas and Easter, okay, and places you must know about places, for example, Big Ben, London Eye, and you must know about the food of different cultures, for example, fish chips, roast dinner, etc. Institutions, BBC, Oxford University, like that you must have some kind of information about these uh things. Okay, and my life example, when I first starting English movies, I didn't understand many cultural references like Thanksgiving or Halloween. Okay, but now I teach many students, so I know most of the references, and they can be confusing for the IELTS students. But if you know them, then it becomes very easy for you to understand the cultural references. You must use appropriate language, culturally appropriate language. If you are not using that, you are going to lose your marks. And one of the most important thing is that you must be polite and formal. Okay, you must be polite and formal. English can help avoid misunderstandings and show respect in different contexts. So you must avoid that. For example, I'll give you the examples over here. So your real part of the test starts here. Examples of culturally appropriate language. So what's that? Excuse me. For example, excuse me is a more formal way instead of saying hey. Instead of hey, you must say like that, I'm gonna change the highlighter color. So excuse me. Instead of hey, you must not say hey. Hey is, more formal. Sorry, informal way. For example, hey, how are you? This is it's quite informal, and it is used in the language of the street of the common man. Okay, when you are quite familiar with one whom you are gonna call, you can use hey.
but excuse me, in the real test, you must not use this word hey. Could you please, instead of give me that is quite impolite. If you say while sitting in the examination center, in the examination hall, you say, give me that. No, it's not. Could you please give me that like that? You must use appropriate and polite way, polite things. Okay. I would appreciate if it, instead of do this for me is quite impolite. If you directly you are gonna give order, ऐसे है जिस तरह से आप कोई हुक्म दे रहे हैं, तो ये तरीकाकार अच्छा नहीं है. I would appreciate if it is, ये instead आपने ये यूज करने का, I would appreciate it if you do this for me. Right? Question: describe a situation when you helped someone. For example, this is a question. So now the answer. आइल्स में अगर आपसे कहा जाता है कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हेल्प्ड समवन, ये आप ऐसी सिचुएशन बयान करें जिसमें, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है आइल्स के इम्तिहान में, ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है. सो डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हेल्प्ड समवन. किसी की एक ऐसी सिचुएशन बयान करें जिसमें आपने किसी की मदद की है. ओके, सो गुड रिस्पॉन्स इज दैट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी आपसे बात की है कि आपने हे और डायरेक्टली आप कहीं गिव मी दैट. सो इस तरह की डायरेक्टली और वन वर्ड आंसर, इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे, सो योर बैंड स्कोर इज गोना वेरी लो. ओके, सो लास्ट ईयर, और इसमें अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर को लास्ट ईयर भी बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज में. लास्ट ईयर च साउंड comes here instead of t. Last year, no, last year, last year. Okay, so I helped an elderly neighbor carry her groceries. She was very thankful, and I felt good about being respectful and helpful. This is good answer. You know, इसमें कोई इस तरह से नहीं है ये हे और ये सारे की सारी जितना भी आपने सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स यूज किया है, ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा रिस्पेक्टफुल है और पोलाइट है. Okay, so what is it? You must be polite and humble in your tone. Okay, use softness like I think, perhaps, and it seems instead of the you can say, for example, I think that it is good. लेकिन अगर आप सीधा ही कहते नहीं इट इज गुड, यू मस्ट डू इट, दिस इज इम्पोलाइट वे. इससे इसको आपने अवॉइड करना. परहैप्स इट सीम्स दैट द पीपल आर मेकिंग प्रोग्रेस. ओके, सो इस तरह की चीजें आपने इस्तेमाल करनी है कि जिससे पता चले कि आप पोलाइट तरीकेकार इस्तेमाल कर रहे हो, आप इम्पोलाइट नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल, when I emailed a British teacher for a speaking course, I started with dear sir or madam. आप डायरेक्टली कहेंगे I want to take the IELTS test, or I want to take I want to join your course. This is quite impolite. अब कभी भी ऐसा आप नहीं कह सकते. So आपने politeness की तरफ आना है in your IELTS test. For example, when you are gonna take some official course, when you wanna get some help from native speakers, so dear sir, dear madam, इस तरह के ऑफिशियली आप ईमेल करनी है तो आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे. अगर आप डियर सर या डियर मैडम नहीं कहते, सो वो आपको बंदा कहेगा कि यार इसको तो बात करने का तरीका ही नहीं आता. सो डियर सर एंड डियर मैडम you will use, and use polite phrases like I hope this message finds you well. ठीक है जी, ये नहीं आई एम सेंडिंग यू द मैसेज एंड रिप्लाई मी. नो, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल. ये एक अच्छा है, पोलाइट तरीका है बात करने का. ये उनके कल्चरली, इसको कल्चरली इट इज एक्सेप्टेड. ओके, सो यू मस्ट यूज these kind of phrases or these kind of sentences when you are gonna uh, uh, communicate, or when you are going to talk with native speakers to make a good impression. It will create
your good impression on the one whom you are gonna talk. Okay, so now later I shared this technique with my students. Now I'm gonna share it with you. This is my personal example. Okay, avoiding common cultural misunderstandings. Okay, so cultural misunderstandings can hurt your IELTS score. For example, jokes, slang, or informal behavior may not be suitable in your formal speaking situations. IELTS test, this is your formal situation. So you must avoid that. You must not misunderstand. For example, you must not add jokes in your speech or in your spoken test slang you must not use or informal behavior you must act in the formal way okay ये वो बात नहीं है आप किसी मजमे में बैठ के अपने दोस्तों के साथ गपशप नहीं कर रहे तो इस लिहाज से आपने कोई इस तरह का मजाक इस तरह के स्लैंग लैंग्वेज या इनफॉर्मल बिहेवियर आपने नहीं देना जिस तरह आप मजाक करना शुरू करते हैं इस तरह की कोई भी ऐसी चीज जिससे इट मे हर्ट योर आइल्स स्कोर इसको आपने लाजमी याद रखना है कि इट कैन हर्ट योर आइल्स स्कोर राइट सो द नेक्स्ट वन कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड there are some common mistakes you must avoid using informal slang use नहीं करनी informal slang नहीं ये for example use you man that's later no this is not it's too informal ये आपने इस तरह नहीं करना you man वो इस तरह की चीजें you man you are listening me like that this is quite informal overgeneralizing all British people drink tea all day. ये ओवर जनरलाइज नहीं कर देना फॉर एग्जाम्पल सारे लोग तो टी नहीं पीते ना all या आप कहेंगे all Pakistani drink tea or take tea all day so this is not correct so ये सब पर आप ये कह सकते हैं कि most of the people or some of the people in Pakistan take or drink tea all day or they have too many cup of tea every day so इस तरह से हो सकता है but over generalize all Pakistani all British all American do this so this is quite over generalizing so you must avoid it okay being too direct or rude you are wrong direct answer नहीं देना डायरेक्टली आप जिसको कहते हैं ना मुंह पे बात करते हैं ना ये अंग्रेजों में इस तरह से नहीं होता कि आप डायरेक्टली किसी तुम गलत हो इस मामले में मैं तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता सो दीज आर रॉन्ग थिंग्स ओके सो यू आर रॉन्ग इंस्टेड आई सी इट डिफरेंटली आई सी इट डिफरेंटली यार आप जिस तरह से सोच रहे हो आई एम थिंकिंग डिफरेंटली और यू कैन से दैट my opinion I'm having a different opinion on this issue or on this thing on this topic on this viewpoint okay so polite way, adopt polite way to communicate or to answer or to respond. So, okay, for example, do you think young people should work while studying? So good. Yes, I believe. इस तरह के अल्फाज आप जरूर इस्तेमाल करें. Yes, I believe part-time work teaches responsibility. However, it must be balanced with studies to avoid stress. आपने दोनों views आपने दे दिए और बड़े अच्छे तरीके से दिए. This is a good response. और अगर आप कहते हैं कि do you think young people आप कहते हैं young people should not work while studying. So this is too direct. ये एक डायरेक्ट आंसर है जो कि अंग्रेज या अगला बंदा या जो आपका टेस्ट चेकर समझेगा कि यार ये रिस्पॉन्स इसने अच्छा नहीं दिया इट इज क्वाइट rude so you must avoid that so tip क्या है avoid jokes references that could be misunderstood by the examiner okay तो ऐसा रेफरेंस नहीं देना और कोई ऐसा मजाक नहीं करना अपने टेस्ट में जिससे आपका एग्जामिनर समझे कि आप तो क्वाइट इम्पोलाइट हैं ठीक है जी सो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको कुछ समझ आ रही है ओके
अगर आपको कुछ समझ आ रही है. So one of my students used phrase "it's raining cats and dogs." ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको during the IELTS test, but he didn't explain what it meant. The examiner looked confused. I now teach students to either avoid idioms they don't fully understood or explain them. So कोशिश करें कि अगर आपने कोई idiom ऐसा इस्तेमाल किया है जो कि quite that is quite not common, so try to explain in the next line. Okay, you can use idiom, but you must try to explain that in the next line. Okay, Kamran, you will come over here. This is not your test, but you can listen. This is IELTS test. This is actually I'm making for uh, to share on YouTube. Okay, ये मेरी YouTube पे शेयर किया जा रहा है, तो ये मैं YouTube के लिए बना रहा हूँ. तो आप आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम दैट. मोस्ट वेलकम फॉर दैट. ओके, सो life example. Once one of my students, ये जो कुछ समझ आ जाए कामरान है, अगर ठीक है ना ये तो this is for YouTube purposes. Okay, so building cross cultural communication skills, being able to communicate cross cultural is vital, especially for those planning to study or work abroad. जाहिर है उनके कल्चर को किसी ना किसी हद तक समझना है, और अभी तक की गुफ्तगू में यही है कि आपने you have to be polite in your conversation. ये मैं आपको बता रहा था कल ही कि यार अंग्रेज जो होते हैं ना, ये जब आप डायरेक्ट आंसर देते हैं तो ये इम्पोलाइट होता है. तो ये एक्चुअली दिस टॉक इज अबाउट दैट. ओके कामरान, ये सारी गुफ्तगू उसी के बारे में है कि इफ यू डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन, डायरेक्टली आंसर, it's not good for you, right? So the next one, uh, skills to develop. आपने करना क्या है? You have to develop active listening. ये नहीं अगर सुनते जा रहे हो but you are not going to understand anything. Just again and again listen that at least 7 times. You must watch a video. Okay, empathy and open-minded. You must be kind and open-mindedness show in your adapting your communication style. और आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर. ओके, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड टोन. किसी बंदे की आपको बॉडी लैंग्वेज भी समझनी चाहिए कि वो किस मूड में है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू टॉक. फिर मैं एग्जांपल क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे. डिस्क्राइब अ टीम प्रोजेक्ट यू वर्क ऑन. आइल्स में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अ team project you worked on. All right. So good response. During my online course, I worked with students from different countries. At first, it was difficult to understand each other's communication style, but gradually we learned to respect each other's opinions and work well together. ये personal example है जिसको आप छोड़े. Tip मैं आपको देने लगा हूँ. What is tip? Tip for that. Tip for that. What is tip? Practice speaking with people from different must listen podcasts or join international forums if you can and understand other how other cultures express ideas. Okay, so ये चीज है. ये कामरान फिर अगेन आपको बता दूं कि दिस इज फॉर द आईएलटीएस स्टूडेंट्स. तो अगर समझ ना आए तो कोई मसला नहीं. और दूसरा भी कैसे आपने देर से इसको ज्वाइन किया है. सो दैट्स व्हाई यू